Elite Kashmir Classes presents a poem Once Upon a Time. Complete analysis in English, Hindi, and Urdu by Bashir Sir. Dear students, I welcome you all today with a new poem Once Upon a Time. Once Upon a Time is written by Gabriel Okara. First, I will read out the text, after that, I'll explain it in English and Urdu. Once upon a time, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadows. There was time indeed. They used to shake hands with their hearts, but now that is gone, son. Now they shake hands while their left hand searched my empty pockets. Feel at home, they say, and when I come again, and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then the doors are shut on me. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles, like a fixed portrait smile. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good reading, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. But believe me, sir, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh for my laugh in the mirror. Show only my teeth like a snake's bare fangs. So show me, son, how to laugh and smile once upon a time when I was like you. So this is the poem which is written by Gabriel Okara. Gabriel Okara is considered to be one of the most famous modern African poet. The background of this poem is actually Nigeria got freedom in 1921, 1967, but still the people were under the control of the British culture and British society. So he satirizes that society, and we can also say that he satirizes the Western culture, Western society, modernization also. So he satirizes modern poetry. First, I will tell you what actually satire means. Satire is a technique employed by writers to expose and criticize foolishness and corruption of an individual or a society by using humor, irony, or ridicules. It intends to improve humanity by criticizing its follies and foibles. So he also used here figure of speech, metaphor, simile, alliteration, assonance. So I'll explain them in a brief definition. So metaphor is a figure of speech that makes an implicit or hidden comparison between two things that are unrelated but which share some common characteristics. Just like I'll give the example, she is a rose. So rose has been compared with a she. This metaphor. So simile means a simile is a figure of speech that makes comparison between two different things using the words like or as. Same example if I use like this, she is like a rose. So he also used here the alliteration. Alliteration means two or more than two words and start with the consonant sounds. Take so we see here in many lines he used this alliteration also. So तो आप इस पोएम में देखोगे कि पोइट जो है वो किस तरीके से दो एजेस को कंपेयर और कंट्राडिक्ट करता है कि एक उसकी जो एज थी और मॉडर्न एज थी उसमें क्या डिफरेंस आ गई कि लोग कैसे बदल गए हैं वेस्टर्नाइजेशन की वजह से या जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों में जो वो इमोशंस थी वो फीलिंग्स थी वो काइंडनेस थी वो लव थी सिंपैथी थी वो सारी चीज़ें उनकी डेफिनेशन अब चेंज हो गई है. So we can say in this poem the poet satirized the hypocrisy and artificial behavior of modern man. He presents two contrasted pictures of human behavior. In the past, human beings were true, sincere, and friendly. They share everything with love, with sincerity. But now everything has the artificiality. But now the situation is very entirely different. Outwardly, man appears to be cordial and friendly, but actually, in reality, he is not cordial. At heart, he is selfish and cunning. The poet himself has seen a change in his own behavior with growing years. He sees innocence and purity in the nature of his son. He wants his son to help him get back his basic nature. This poem is
free verse and divided into 7 stanzas. If we see in the first stanza, he compares the modern and the ancient people. So in this sentence, he actually wants to convey us. Explains Hindi also. In the first stanza, we see that they has been used 2 times. First day is used for the ancient people, and the second day is used for the modern people. If you see in the first year, they used to love with their heart and eyes. It means that when the ancient people they love, they show their real feelings, and we see that feelings on their eyes also, because eyes were bright and cheerful. But now they love, and this love with the modern people, if we compare, it is very different. Modern people also love, but they love, that love does not have the involvement of the heart and eyes. There is no shine in their eyes. यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग और नए ज़माने के लोगों के हंसने में क्या अंतर है। ये है कि पुराने ज़माने के लोग जब हंसते थे, दिल से हंसते थे, और उनकी जो हंसी, उसकी जो चमक, उसकी वो झलक, वो उनकी आंखों से बयान होती है। लेकिन आज कल के ज़माने के लोग भी हंसते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी हंसी जो है ना, वो बनावटी है, वो नकली है। तो दूसरे स्टेंजा में बोलता है कि हैंड शेक, दे यूज्ड शेक हैंड्स, दैट मीन्स द एंशिएंट पीपल विद देयर हार्ट। यानी कि मिलना असल में क्या है, ये इंसान जब एक दूसरे से मिलते हैं, वी शेयर आवर फीलिंग्स, वी शेयर आवर लव, वी शेयर आवर काइंडनेस। सो मॉडर्न लोग भी हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनका जो हाथ मिलाना होता है वो नकली होता है। यहाँ पर इसने बताया कि while their left hand surged behind my pocket, इसका मतलब ये है कि वो मटीरियलिस्ट हैं, वो कुछ न कुछ ढूंढते हैं, वो कुछ न कुछ तलाश करते हैं कि इससे कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। यानी कि आजकल की दोस्ती जिसको हम समझेंगे कि ये मतलबी दोस्ती है। और तीसरे स्टेंजा में जब हम देखते हैं इसमें कि वो सिर्फ मॉडर्न ज़माने के लोगों की बात करता है, कि वो क्या बोलते हैं, जब मैं उनके घर चला जाता हूँ, बोलते हैं फील एट होम, दैट मीन्स बी कंफर्टेबल। आप जैसे आज मॉडर्न ज़माने में बोलते हैं कि आप इसको अपना ही घर समझो, जो मर्जी है वो करो, आया करो, बार बार आया करो। यानी कि हम जो हैं, हम अपनी जो वर्ड्स हैं और हमारी जो दिल हैं, वो कंट्राडिक्ट करते हैं। बातें कुछ होती हैं और दिल में कुछ और होता है। सो द Gabriel Okara says here that once twice there will be no thrice. एक बार जाओगे, दूसरी बार जाओगे, तीसरी बार क्या होगा, द डोर्स आर शट ऑन मी, दैट मीन्स हमेशा के लिए फिर दरवाजे बंद होते हैं। कश्मीरी में एक वो फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं उठ मुदिर दिल ऊन, यानी कि मुंह से मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दिल इनका बहुत कच्चा होता है। तो जब इंसान जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बनता है। अच्छे लोगों के साथ जब इंसान बैठता है तो अच्छा ही बनेगा, बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो बुरा ही बनेगा। गैब्रियल ओकारा क्योंकि जब अब मॉडर्न लोगों के साथ बैठा है, अभी अपने बेटे से बोलता है कि मैंने भी सीखा है इन लोगों से, इन मॉडर्न लोगों से। मैं जब हाथ मिलाता हूँ, मैं दिल से नहीं मिलाता हूँ, मेरी आंखों में कोई खुशी नहीं होती। और जब मैं किससे मिलता हूँ उसको बोलता हूँ ग्लैड टू मीट यू। इसमें यहाँ पर डबल टॉक इस्तेमाल हो गया, यानी कि डबल टॉक मीन्स दैट व्हेन देयर द वर्ड्स हैव द डबल मीनिंग्स, एक वन इज द सरफेस मीनिंग, अनदर इज द इंटरनल मीनिंग। वी कैन अंडरस्टैंड हियर हाउ ही यूज्ड दिस डबल टॉक। ही सेड दैट ग्लैड टू मीट यू, जब हम किसी को बोलते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन दिल में असल में क्या होते हैं, हम तंग आ गए होते हैं, उससे बोर हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोलता है कि आफ्टर बीइंग बोर्ड एंड टू से गुड बाय। ठीक, आप जब किसी को रुखसत देते हो, उसको गुड बाय करते हो, असल में गुड रीडियंस, अंदर दिल में नफरत होती है। सो ही ऑल्सो सेज दैट इन द नेक्स्ट दैट आई हैव ऑल्सो लर्नड फ्रॉम दीज मॉडर्न पीपल टू वियर मेनी फेस। एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग। यहाँ पर एक घर का चेहरा होता है होम फेस, और जब रास्ते से इंसान चलता है तो हो गया स्ट्रीट फेस, और जब आप किसी के घर जाओगे तो हो गया होस्ट फेस, और जब ऑफिस में होते हैं तो गया ऑफिस फेस, एंड कॉकटेल फेस, दैट फेस विच यू टेक टू द पार्टीज, जो सज संवर के इंसान चला जाता है किसी दावत वगैरह में। सो एंड कन्फर्म स्माइल्स लाइक ए पोर्ट्रेट, हमारी चेहरे पर ऐसी स्माइल होती है जैसे कि फोटोग्राफ होता है वो चला जाता है, क्योंकि हमने अपने आप का जो चेहरा होता है उस तरीके से निखारा होता है कि अब हमें वो नकली बनावटी स्माइल दिखानी पड़ती है ताकि और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे।
लेकिन अच्छा आदमी जो होता है वो, हम कभी अगर बुरा भी बनता है, क्योंकि बुरे लोगों से मिलके, लेकिन उसके अंदर वो अच्छाई अभी भी मौजूद होती है। अब वो चाहता है कि कंपेयर करके, नहीं जी वही ज़माना अच्छा था, वो जो उसका ज़माना था, वो जो उसका बचपन का ज़माना था, कितने लोग सीधे थे, सिंसियर थे, विथ हार्ट, दिल से एक दूसरे को के साथ पेश आते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा है। सो in the second last in the last stanza, he says to his son that I want to unlearn all these muting things. Muting things means those things which have changed my nature. So I want to unlearn. That means I want to forget everything what I have learned from the modern people, and I want to relearn. So three times here the prefix has been used with the learn, unlearn, and relearn. So now I want to relearn. That means he was already learned, but now because of the modernization he forgot that. That is why he is now praying his son that teach me, because you are innocent, you are young, and how I used to be, जैसे मैं हुआ करता था, जैसे मैं हंसता था। जब मैं आज जाता हूँ चेहरा अपने शीशे के पास, अपने आप को हंसते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे जो ये दांत हैं, these teeth, ये कैसे लग रहे हैं, लाइक स्नेक्स बियर फैंग, सांप के वो डसने वाले दांत हैं। दैट मीन्स इन दांतों में वो खुशी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इंसान जो होता था, वो जो सिंसियर होता था, फिर उसकी वो खुशी इजहार होती थी उसके हंसी में, उसकी वो खुशी इजहार होती थी जब वो किसी से हाथ मिलाता था, उसकी वो खुशी इजहार होती थी जब वो किसी को बोलता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन ये सारे जो हैं डबल टॉक आज बन गए, इनके पीछे कुछ और होता है। इंसान बोलता है खुश हूँ लेकिन हो जाता है दुखी, ठीक। इंसान हंसता है लेकिन अंदर दिल में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो दायां हाथ मिलाता है, बाएं हाथ से कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। सो ये जो मटेरियलिस्ट एज आ गई है, इसको चाहता है पोइट गैब्रियल ओकारा कि मैं भूल जाऊं और फिर से मैं सीखूं। अपने बेटे से बोलता है मुझे सिखाओ हाउ आई यूज टू लव व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं आप जितना था, जिस वक्त मैं हंसता था, दिल से हंसता था। सो नाउ if we see the themes of this poem, that is corruption, change and cultural shift, capitalism, morality, because modern age, if we see, it is morally degraded and spiritually barren. The poet tries actually here to criticize hypocrisy of the modern man. He says that the modern man is insincere, is shallow, is artificial. The poet regards the best as a period of honesty and sincerity. That was his own age. As against this, he sees the present as a period of fakery, shallowness, and hollowness. This contrast between the modern man and the man of the past has led to the degeneration of the modern man. People in the past were pure, simple at heart. Their eyes and their face reflect their hearts, but the modern man has become very hypocritical. He can laugh without being happy. He can shake hands with you while he's picking your pocket with the left hand. He says goodbye when actually he is not happy. I hope that you have enjoyed this poem. Thank you very much.